Okay. Hello, everyone. This is free Nati Hindi class provided by CECA. My name is Shipra and I'll be taking today's Nati class in Hindi. Before we start, I just wanted to draw your attention towards other free services provided by CECA, which is free PTE class and free IELTS class. We also have Nati in three other languages apart from Hindi, which is Nati Urdu, Nati Nepalese, and Nati Punjabi. So if any of you are interested in that, you can like us on Facebook or give us a call. We'll be able to help you with that. We definitely give all kinds of migration advice. Or if you want a student visa for US, UK, Canada, or New Zealand, we can help you with that as well. Okay. For now, let's begin our class. Now, before we start, we have an old student, Ritesh, who has some questions. So, Ritesh, you can ask me your questions now. Okay, thank you, ma'am. Uh, so basically, so I've been practicing for Nati dialogues. Yeah. I've practiced few already now, but Okay. recently I realized that I'm facing problem, maybe not taking the right correction. I mean, sometimes Mhm. I find that I have all the notes, but in order to translate in a proper sentence or sentence formation, I sometimes mug up, and so I don't know where to take correction or where not to take correction, because I don't want to take unnecessary corrections as well, but at the same time I don't Yeah. want to lose my marks just because of my murmuring or influency. Even though I have the notes, even though I have the Mhm. vocabulary, I know what to say it, but I mean, this is the problem I'm facing right now. I'm not sure how we can practice, or how we can best deal with this problem. Okay. Look, Ritesh, for correction, obviously, like you said, you shouldn't anyway be taking a lot of correction. It should only happen when you want to change the content of your segment. So let's say if mistakenly you forgot one part of the sentence, then you say correction and then you correct it. But you can't say correction to help you with fluency. Okay, Okay. sometimes students don't do the segments properly. They say correction, they go back, and then they start saying fluently. That's not going to help you in scoring. Whatever you said it the first time, with all the pauses and hesitations, that's what will be calculated because your marks would already be deducted for that. Only thing correction is going to help you is with adding new information. So if you don't have new information, don't bother about correction. Now, if you're Okay. hesitating a lot, make sure you go for simple words. If there is something that is making you confused about the vocab or meaning, and you're trying to look for, mostly the time when students hesitate is when they are trying to look for proper words. Yeah, Okay. word form. I mean, vocabulary is fine. I mean, I've been Hmm. practicing vocabulary a lot, but Yeah. see, sometimes it happens like the sentence of English and Hindi is not word to word, right? So Yeah. uh, it is different way. I mean, when I start Hmm. translating after seeing my notes, I just go with the sentence rather than reading the whole sentence and then repeating it. So in that way, I in the middle of the sentence I realized that okay, this is not how I should start it. So Right. I thought Yeah. maybe I can, if you can repeat or correct that Yes. particular sentence, it will make more sense to what I'm trying to say. Yeah, yeah. Look, NATI CCL exam is going to be very easy. Most of the sentences or segments will be like one or two sentences. Okay. So Hmm. in case if in couple of segments you think you need repeat you or you need to frame the sentence better, because of that you need to take correction or take repeat or whatever, do it. Even if it's the first segment, do it, because most of the times the sentences are going to be pretty easy. So even if the first segment is really complicated, probably that's the only one. So don't hesitate to take repeat. Obviously, only one repeat is penalty free in each dialogue. So, um, max go to repeats each dialogue. Okay. Yeah. Okay. So repeat, I understand we have to take just one, but Hmm. in the correction also I'm confused. Like, is it only one allowed?
in No, the no, whole it's nothing dialogue? allowed. Or Nothing allowed. If you do 2, 3 times, that's fine, as long as you're adding proper information to it. Okay, okay, only few times it just gets over. Like some of my previous experiences with students has been like they will say one segment, like let's say I'm going to university today. Okay, I am correction, going to correction, university correction. So this is really bad that you're using correction every 2 words and you're not even correcting yourself. okay, Okay, and this has happened with students before, so this is what you need to be aware of. But in one segment, 1 or 2 places, if you're using correction and then adding information, then it's fine. You'll not miss points for it. okay. So I mean, so just to conclude, so if I have the information and if I can have the vocabulary, maybe some Uh-huh. sentences were jumbled because of Yeah. conversation from English to Hindi or Hindi to English. Mhm. Do you advise me to take correction in that case to frame the sentence correctly, or just go as it is? No, in that case, take repeat, because just correction is not going to help you with framing an entire sentence. If it helps you, then it's fine. But most of the time, when you're trying to structure a whole sentence, 2, 3 sentences together, and it gets complicated, take repeat. Otherwise, yes, correction is obviously. If it helps you, then it's fine. No issues with that. Okay, ma'am. Okay. Okay. All right. Yeah. Yeah. Anything else? Yeah, one small question as well. Yeah. In Nati exam, Mm-hmm. will it always start with Lottie or Hindi first, No, then English, no, or nothing. it can be either Nothing way? like that. Either way. Okay. Nothing like that. Okay. Kanu Priya. Is this your first class as well? Hi, yes, it is my first. Okay. Have you already booked your test, Kanu Priya? No, I haven't. I'm actually overseas right now, and my student visa will end in July. So I have to apply Okay. for my PR after that. Okay. 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 All right. Your voice is not very clear. I'm not sure how you're talking. I can't hear you clearly. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So I'll give introduction then. Two of you are new, and Lalit, you have attended class before, right? Yes, I have. Yeah. Okay. So we'll start with the introduction again. Um, Let me share my screen. Okay, everyone can see the CCL page. Yes, ma'am. Yes. Yep. Yeah. Okay. All right. So this is the main CCL page where the instructions to book your test and everything is given. Okay. Now this also gives you information that what actually is there in CCL. What topics are included, what are the things because of which you might lose your points. So all of this and what is the technology requirements, all of this are given. Okay. So now let's first discuss what's the test format. Now, test format is basically you get two dialogues. What are dialogues? Dialogues are basically conversation between two people. Okay, so they can be inspired by real life situations, mostly communication between two people in a legal scenario or in an education sector. So these are the topics. Okay, for example, let's say if we talk about consumer affairs, so it can be a conversation between two people where one person has purchased something. Let's say if you purchase a phone and it's not working properly, you're going and complaining regarding that. Okay, so the conversation, like, hi, how can I help you, and then the other person will say that मैंने एक फोन खरीदा था जो अभी काम नहीं कर रहा है. So this is conversation. The entire thing will be one dialogue. Okay.
Now, next thing is how long can the dialogues be? Dialogues are usually maximum 300 words, and each segment will maximum be 35 words. Most of the time, the trend that I have seen is about 20 to 25 words for most of the segments. What are segments? Let me give you an example. Okay, so can you see on my screen now? So each of this is called a segment. Okay, so there are 28 words in this. So that is definitely your CCL level. Okay, so this is what your dialogue is going to look like. One English, one Hindi, one English, one Hindi. But it's not necessary that the first one you will get is going to be English, or first one you'll get is going to be Hindi. It's different for different people. Okay, also most of the times we see good morning, good evening, hello, and all of this in the start, and not much information, just saying good morning, how can I help you today. Most of the times it will be there, but sometimes they also start with a very difficult sentence or segment, basically with a lot of information in it. Okay, so be prepared for that as well in your exam, especially Ritesh and Samadrita. You guys have your exam really soon, so you should be prepared. You should be prepared in your exam for anything that can come up. Okay, so that's why I was suggesting you, Ritesh, even if it's the first segment and you think it is difficult, do take the repeat, because it has happened few times that just the first sentence has a lot of information. It's almost 3 to 4 sentences long. So keep that in mind. Okay. All right. Next. Okay. Next thing is, these are the topics, which is business. So under business, you can get topics like, I want to expand my business in Australia. I want to expand my business from Melbourne to Sydney, or I want to bring my business from India to Australia, or I want to sell some products in Australia, or there is some business meeting I want to do. So these are the subtopics under business. Next one is consumer affairs, which I already just discussed, that mostly will be about complaints. Other than that, next is employment. Under employment, you'll get all sorts of employment questions, which is basically hiring. Then could be workers' compensation, could be some issues at work, or paid, want to get more pay. So all of this will come under employment. Health has numerous amount of topic. It can be anything from just looking, sorry, not looking, just going to a GP, to all the big diseases, cancers, tuberculosis. All of this will come under health, and a vocab list will be provided to you regarding that. So you don't have to get stressed that, oh my God, so many dialogues, that means so many vocab. The general conversation is most of the times same. It's just that the main word will be different, which is, let's say if it is cancer, then it will be like, what are the symptoms of cancer? So symptoms word is going to be there with pretty much all the health dialogues in order to diagnose what's going on. Okay. So that's with health. Immigration is all different kinds of visa, parent visa, partner visa, student visa. So conversation regarding that will come under immigration. Legal is all your compensations, your allowances, all of that will come under legal. Centrelink, if you're aware of Centrelink, then all the Centrelink payments, and there are multiple payments like that. So that will come under legal. Community, some of the community things will be there. For example, also community service can be there for your community topic. This is not very popular that I have seen. Mostly I have seen health,
immigration, legal, and some of insurance. Okay, these four are really, really popular, but sometimes students do also get the other topics. It's not that I'm saying that it's not going to be in your exam, but the other ones are more main. In community, I think, is the least one. Education, it has come in exam recently, and the topic that came was change of course from one course to another course. For example, changing your course from accounting to IT. So you go to student service center and you talk to student service center that, okay, I'm doing this course now, but I want to change the course. What are the procedure? Then they will tell you, do you have your ID proof with you? You give your ID proof. Then they will tell you, okay, so do you have these documents with you? And then the student will be like, no, I don't have it. Then they will give a list of documents. So this is the basic procedure that they follow. Okay, each and everything they will be asking in separate segments. Okay, financial, a lot of banking dialogues, savings account, deposit, all of this will come under financial. Housing, like I told you, can be university accommodation, or a lot of the times I've seen rental agreement or lease agreement coming in exam. So just focus on the vocab for housing, like what is bond or what is deposit. Bond in Hindi will also be bond. Deposit in Hindi will be jama rashi. Okay, so looking at these vocabs. Insurance, bima, which is all, every insurance can come under it, but you just need to remember the main ones, which is basically car insurance. And under car insurance you have multiple insurance, which is comprehensive third party insurance or third party insurance. Other than that, the other insurances, you can just, even if you get it in exam, you remember that insurance in Hindi is bima. And if it says insurance for let's say jewelry that I have at home, see, that jewelry is a common word which you can interpret on the spot. Okay, so few remember that's there in the vocab list. Apart from that, I wouldn't suggest you to go out of the way and try to remember all the housing, sorry, all the insurance name. Now, only thing that I would ask you to go out of the way and remember is Centrelink payments. So I'm going to send a link just now so that you have a list of all the Centrelink payments in Hindi. Just give me 1 minute and I'm going to be sending you now. Okay, so did everyone receive the link? Got Yes, the ma'am. link, right? Yep. Okay. All right, so these were the topics. And now let's see on what basis will your dialogues would be judged or your interpretation will be judged. Now there is few things: language quality, language register. It basically means
how well do you speak both the languages, including your fluency and grammar? Okay, it's not just that you present the meaning, it's also your grammar level, how you're speaking, because it will be considered as if you're speaking in a professional environment, so you need to use words that are used in more professional terms. For example, if I say मुझे ये काम करना है, and if I say मेरे को ये काम करना है, so that is the second one is not professional. It's not in terms of how you would present yourself in a legal scenario, so that you have to maintain. Even if like there was nothing, no incorrect information, still you will miss points for it. Okay, so you always have to think how would you do it if you were in that scenario. Okay, now next is the 4 types of errors that are most common, and because of which you can lose your points. So first one is accuracy. That means how accurately or correctly you're giving your information. For example, there is 10-digit phone number. So if you forget one digit and you say something else, so one incorrect digit will be accuracy problem. Okay, so you'll miss points for that. Distortion is completely misrepresenting the information. Whatever is there, you're saying something else. Okay, for example, let's say if I say, for example, this person, let's say, Seema has gone to India for good. For good means going forever. Okay. So in Hindi, if you do word to word interpretation, is like Seema Bharat अच्छे के लिए चली गई है. But exact meaning is Seema Bharat हमेशा के लिए चली गई है. So this is what distortion means. There are many of those words. For example, other one is medical attention. Okay, so if a dialogue says that this person, let's say Seema, needs medical attention, so how would you interpret it? So when we do it in Hindi, we will say Seema ko chikitsaye sahayata chahiye. Sahayata and attention, it's not exact interpretation of that word, but what is the meaning? The meaning is that Seema needed medical attention. That means medical services as soon as possible. So you interpret according to what it means, not what the words individually are telling you. Okay. Now, next is omission. That means removal of information. Again, example of 10-digit mobile number. So if you forget one of the digits, then you will miss points on that. All right. Next is insertion. So if you're adding information from your side, that's also when you miss points, not for just removing the information. Okay. Next, now a few things are not mentioned here, which is basically pausing, hesitations, taking too many corrections, taking repeats. Now, what are repeats? Repeats are basically if you didn't hear one of the segment, then you can take a repeat, and one segment is penalty free, which is, let's say, if I didn't hear just this segments, if I didn't hear what are the age of the kids, in that case I take a repeat only for this segment, and that will be penalty free. But if you start taking for each of the segments, then whoever has taken 4 repeats has not cleared their test. Okay, so that means that's really bad if you're taking a lot of repeats. So don't do that in your exam. Okay. What are the passing marks? Passing marks are 63 or higher. That is one criteria. The other criteria is getting at least 29 in each dialogue. Okay, so you get minimum 29, and overall you also have to get 63. So there are 2 things that you need to fulfill. 58 to 62.5 is marginal fail, where you can appeal for a recheck. Clear fail is below 58. You can't appeal for anything. That's what you get basically. Results takes 4 to 6 weeks. These days I've also seen that sometimes results are also out in not 2 weeks, but at least 3 weeks. Okay.
Now, this is how you need to book your test, which I think most of you would already know. But if you have any issues, you can ask me, or better just call Nati or email them. They will also be able to help you with that. And there are also frequently asked questions. So you can go through that list, that what documents are required and all the different kinds of questions, which are very common. They give you answers for that as well. Okay. Any questions? Everyone good, especially Kanupriya and Samadrita, because this was mainly for you. Others have already attended it. Yes, Shipra, all good. Okay. All right. What I'll do now is give you my phone number and you can text me on that number. And I'll add you to the WhatsApp group to forward all the materials, because later on I forget and then it's really busy. So send me a message now so that I can forward all the materials to you guys right now. Okay. And WhatsApp me, don't text message. So WhatsApp me on this number, the one that I've given you. If you're outside India, I mean outside Australia, save it like this with +61. All right, I'll be waiting. So send me your details. Ma'am, can you also please add me to the WhatsApp group? I'm not sure if there is any. Okay, yeah, I'll add you now. Okay, thank you, ma'am. I just pinged you as well. Okay, I received all of your things. Let me just sort this out right now. Hang on. Just give me 2 minutes. Yes, ma'am.
Okay, those who have booked their test, Lalit, did you book your test? If you have booked your test, then send me a WhatsApp message with your test dates so that I can arrange the mock test for you. I had booked it, but then I had to cancel it. So I don't have the confirmation at the moment. I'll be booking it again, but right now I don't see any spots available. Oh, okay. My pinged you my exam date, 7th April. Yeah, got it. Okay, I added you guys to the group. Yes, ma'am. Thank you. Okay, sending the materials again. Okay. So now let's start with our vocabulary practice. So usually what we do in class is that we start with vocabulary practice and then we practice dialogues. Okay. So we'll start with some general terms today. For example, what is registration in Hindi? So anyone who Panj- knows, even new student, you can unmute yourself, and if you know the meaning, you can say it. Okay. So registration, Panjikrat. Panjikaran. Yes. Process, प्रक्रिया Prakriya. correct. Prakriya. Family name, Parivarik पारिवारिक naam. नाम Parivarik naam. Yes.
Center, केंद्र, केंद्र, kendra. Condition, स्थिति, हाँ, स्थिति, स्थिति. Oh. Yes. हालत, स्थिति या अवस्था, तीनों करेक्ट है. और टर्म्स और कंडीशंस, शर्त, नियम व शर्तें, हाँ, नियम और शर्तें. फीस, शुल्क, शुल्क. यस. कोऑपरेट, सहयोग करना, सहयोग, योग. यस. कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण. यस. सिंपथी, सद्भावना, हाँ, या फिर सहानुभूति या हमदर्दी. सेशन, Can का you repeat? सेशन, अवधि नहीं, अवधि पीरियड होगा, सत्र. सत्र, राइट. सेशन इज सत्र. इफेक्टिव, प्रभावित, प्रभावी, यस, असरदार या प्रभावी. अवेलेबल, उपलब्ध, उपलब्ध. यस. बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि. यस. एग्जैक्ट, निश्चित, नहीं, निश्चित इज सर्टेन. एग्जैक्ट यानी सटीक. ओके. परमानेंट, स्थाई, स्थायी, स्थाई, यस, परमानेंट इज स्थायी. इम्पोर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण, हाँ, जरूरी या महत्वपूर्ण. फॉर्चुनेटली, संभोग, संभावना, सौभाग्यवश, सौभाग्य, सौभाग्यवश, सौभाग्यवश, हाँ, सौभाग्यवश. स्पेसिफिक, सटीकता, नहीं, सटीक तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ना. एग्जैक्ट, यस. स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी स्पष्ट. स्पष्ट, यस.
मैम स्पष्ट तो क्लियर होगा ना? यस, क्लियर भी होगा, बट ज्यादातर ये आता है कि कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली व्हाट हैपेंड, क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ? ओके, और स्पेसिफिक रीजन, तो स्पष्ट कारण क्या है? सो दिस इज वेरी कॉमन वर्ड दैट दे यूज इन नाटी. ओके, फिर community. समुदाय. Samudaya. Yes. Samaj. Samaj is society. Okay. Large Indian community. Yep. Okay. भारतीय समुदाय. हाँ, बड़ी भारतीय समुदाय. Renovation. नवीनीकरण. नवीनीकरण. Construction. Nirman. निर्माण. कॉल चल रही. Reference number. संदर्भ संख्या. संदर्भ संख्या. Date of birth. जन्म तिथि. जन्म तिथि. जन्म तिथि. Yes. Verify. पुष्टि. पुष्टि. Yes. Identify. ढूंढ निकालना. That's different. ज्यादातर पहचान करना. हाँ, पहचान करना. Yes, like ID proof, identity proof is पहचान पत्र. Appliance. उपकरण. उपकरण. Yes. Advertisement. विज्ञापन. हाँ, विज्ञापन या इश्तिहार. Sorry. Impossible. असंभव. नामुमकिन. असंभवित. असंभव या नामुमकिन. Briefly. संक्षिप्त में. संक्षेप. Sorry, could you please repeat that again? Briefly. संक्षेप. Okay.
renewal, नवीनतम या नवीनीकरण. नवीनीकरण. Naveentam is like new, very new. Okay. Feedback, Can you repeat? feedback, प्रतिपुष्टि या पुष्टि करना. that is very fine. फीडबैक में हम कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं. फीडबैक इज जस्ट अ कमेंट, तो उसे हम हिंदी में टिप्पणी कहते हैं फीडबैक को. Okay. Approve, approved, अनुमोदित, मान्य. Yeah, yes, you are correct as well. इसे स्वीकृत भी कहते हैं, approved. Ability, क्षमता, क्षमता. Yes. मैम एबिलिटी का काबिल होगा या क्षमता? क्षमता तो कैपेसिटी होता है ना. नहीं, able to do it यानी इसमें क्षमता है या नहीं करने की. ठीक है. Okay. Capacity, let me confirm. Yes, it will be same capacity and ability as well. Both of them will be same. इसमें एबिलिटी या निपुणता स्किल होता है नहीं? यस, एबिलिटी जिस सेंस में भी यूज होगा उस हिसाब से आप वो क्या यूज करेंगे. इन केस ऑफ क्षमता वो बोलेंगे, या फिर योग्यता के केस में भी एबिलिटी आएगा कि इफ दिस पर्सन इज एबल टू जॉइन दिस प्रोग्राम और नॉट. क्या इस इंसान में वो योग्यता है कि वो ये कार्यक्रम में शामिल हो सके या नहीं. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से योग्यता या क्षमता यूज करेंगे एबिलिटी के लिए. ओके. इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी. या कंपल्सरी, जरूरी.
या इम्पोर्टेंट होता जरूरी तो कंपल्सरी. आवश्यक. यस, आवश्यक. जरूरी भी सही है. ओके. Establish, स्थापित. स्थापित. Yes. Performance, प्रदर्शन. प्रदर्शन. Yes. Okay, let's do some medical vocabulary. Flu, संक्रमण. that infection. बुखार. और फिर फीवर क्या होगा? फ्लू भी संक्रमण ही होता है ना, एक दूसरे से फैलता है संक्रमण. संक्रमण की वजह से फ्लू होता है. ओके. फ्लू फ्लू ही रहेगा. ठीक है. अगर कोई बोला कि फ्लू है इसे, तो फिर फ्लू फ्लू रहेगा. पर अगर किसी ने बोला कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है, तो उसे हम हिंदी में अडेप्ट हमने किया है सर्दी और बुखार. ओके. उस सेंस में सर्दी और फ्लू है ऐसा नहीं बोलेंगे, सर्दी और बुखार है. बट ओनली फ्लू को हम हिंदी में फ्लू बोलेंगे. Okay. डायबिटीज, मधुमेह. मधुमेह. Okay. Hyperglycemia, खून में शर्करा की मात्रा बढ़ना. खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना. Okay. Thyroid, कंठ की भी. कंठ. गले में होता है. Anger. गठिया रोग. नहीं, गठिया अर्थराइटिस है. कंठ में होली वाली बीमारी. नहीं, गल ग्रंथि. थायराइड बस ग्लैंड है, अभी बीमारी हुई नहीं है. Okay, it's just the name of gland. Now, hyperthyroidism या hypothyroidism is a type of disease. तो hyperthyroidism को क्या कहेंगे? Hyperthyroidism is when the gland is very active. और active को हिंदी में क्या कहते हैं? सक्रिय. सक्रिय. That's right. तो अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा एक्टिव को क्या बोलेंगे? अति सक्रिय. यस, या फिर अधिक सक्रिय होना.
गल ग्रंथि का अधिक सक्रिय होना. And hypothyroidism, कम सक्रिय. कम कम सक्रिय. हाँ, कम सक्रिय होना. गल ग्रंथि का कम सक्रिय होना. Back pain, पीठ दर्द. हाँ, पीठ दर्द. Balanced diet, संतुलित आहार. संतुलित आहार. Yes. Blood pressure, रक्तचाप. yes, रक्तचाप. High blood pressure, उच्च रक्त. उच्च रक्तचाप. उच्च रक्तचाप. Yes. Cancer, कर्क कर्क रोग. रोग. कर्क रोग. Yes. Contagious, संक्रमित. 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 Yes. Diagnose, Ma'am, can you repeat? diagnose. निदान. Yes, correct. या फिर बीमारी का पता लगाना. Dementia, भूलने की बीमारी. हाँ, भूलने की बीमारी या फिर डिमेंशिया ही. Eating disorder, खाने का विकार. खाने का विकार. Yes. Family history, पारिवारिक. पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं. history, पृष्ठभूमि. इतिहास. पारिवारिक इतिहास. पारिवारिक इतिहास. Yes. General practitioner, सामान्य चिकित्सक. सामान्य चिकित्सक. Yes. Hydrotherapy, पानी से जलोपचार. की वाली उपचार. sorry, जल चिकित्सा या जलोपचार. Medical certificate,
चिकित्सा प्रमाण पत्र. चिकित्सीय प्रमाण पत्र. Yes, Chikitsaye Praman Patra. Okay, I think that's it for vocab today. Okay, let's take 5 minutes break and then we'll start with dialogue practice. Okay. Yeah, just send a message on the chat when you're back so that I know that everyone's back.
Okay, Parth, are you back as well? yeah. Okay, Madhrita? Yes. Yes, Parth? I have like from last week, I just get some of the question like chief marketing officer. What we can say that one into Hindi? Chief Marketing Officer, I think that will be same. Officer yani adhikari. विपणन अधिकारी, Yes. विपणन क्या? मार्केटिंग, मुख्य विपणन अधिकारी. Okay. Marketing means विपणन. Yeah, but Viparan. yes, but position, I think you can keep the same name. All the positions. Mhm. Okay. And just a second. Mhm. Luckily. वो थोड़े लिखे थे पर भूल के अभी मिल नहीं Okay, that's fine. रहे. नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा. Okay, no worries. Okay, let's start practicing. Dialogue 1. This is a dialogue between Mr. Lalit, a Hindi speaking client, and Jason, a probation and parole officer. Jason is explaining a community service order served on Mr. Lalit. The dialogue begins now. Thank you for coming in, Mr. Lalit. My name is Jason, and I am the case manager of your community service order. Namaste, Shriman. Okay. Ritesh. मैडम लास्ट लाइन थोड़ी सी मिस है. आई विल स्टिल ट्राई. आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ललित जी. मेरा नाम जेसन है. मैं आपका मामला अधिकारी हूँ. उसके बाद का भूल गया. Okay. Case manager of what? I mean, I missed that. Okay. कम्युनिटी सर्विस कुछ है. आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद. मेरा नाम जेसन है. मैं आपका कम्युनिटी सर्विस के अधिकारी हूँ. ओके, आपने कुछ लिखा है समाद्रता? हाँ. आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी. मैं जेसन हूँ और मैं आपके कम्युनिटी सर्विस के मामला अधिकारी हूँ. Okay, yes, very good try. Very good. I'm going to repeat it again. Begins now. Thank you for coming in, Mr. Lalit. My name is Jason, and I am the case manager of your community service order. Community case manager यानी मामला अधिकारी, community service order यानी समाज सेवा आदेश. नमस्ते श्रीमान. मैं बहुत खुश हूँ
कि जज ने मुझे जेल नहीं भेजा बल्कि मेरी गुंडागर्दी के लिए सजा के तौर पर मुझे समाज सेवा करने के लिए कहा। समाज सेवा आदेश क्या है? Okay, Parth. Good. Thanks. Judge didn't give me sentence for jail. And can you tell me what is community service order? Yeah. Okay, Ritesh. Uh, I'm very happy that judge has not sentenced me to jail in spite of being I'm hooligan. They have sent me to the community service order. Can you please tell me what is community service order? Okay, yes. Samadrita. Hello, I am very happy that judge did not send me to jail in spite of my criminal activities. Instead, they are offering me community service. Please tell me what is community service order. Yeah, that's correct. Next segment. A community service order is a court order served on lawbreakers to repay the community by performing unpaid work. For your offense, the court issued an order for you to work for 400 hours. Okay. Samadrita, do you want to go first? I actually missed the middle part a lot, but I'll still try. समाज सेवा आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाता है जो कि एक अनपेड बिना भुगतान का काम है और आपको उसके लिए 400 घंटे काम करना पड़ेगा। Okay, थोड़ा सा मिसिंग है, yes. रितेश. समाज सेवा आदेश एक न्यायालय का आदेश है। इसमें छोटे अपराधों के लिए बिना किसी भुगतान के काम करना होता है। आपके लिए ये आदेश 400 घंटे का है। Yes, Parth. समाज सेवा आदेश को न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश है जिसमें आपको बिना वेतन दिए 400 घंटे तक काम करना पड़ेगा। बिना भुगतान के 400 घंटे का आदेश दिया गया। Let's listen to it again. कोई बात क्या है? A community service order is a court order served on lawbreakers. कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर यानी समाज सेवा आदेश एक ऐसा आदेश है जो उनको दिया जाता है जो कानून तोड़ते हैं। To repay the community by performing unpaid work. ताकि वो समाज को वापस दे सके बिना भुगतान की नौकरी करके या बिना भुगतान वाली नौकरी के साथ वो समाज को कुछ वापस कर सके। Okay, next segment. For your offense, the court issued an order for you to work for 400 hours. आपके मामले में या आपने जो जुर्म किया है या आपके अपराध के लिए अदालत ने 400 घंटे का आदेश आपको दिया है। कोई बात नहीं, मैं अदालत के आदेश का पालन करूंगा। क्या मैं समाज सेवा के लिए शनिवार या रविवार चुन सकता हूं? क्योंकि मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूं। Okay, Ritesh. No problem. I will obey the court's order. Can I do the community service on Saturday and Sunday? Because Monday to Friday, I do work. Yeah, that's fine. Parth.
Sorry, I just forgot. Okay. सुमात्रिता आपके पास है? हाँ, no problem. I'll obey the court's order. Can I do the work on Saturday and Sunday because I work from Monday to Friday? Yeah, that's fine. Since you live in Bankstown, we have found a workplace for you in the same area. But it's closed on weekends, so you have no other options than taking leave to complete the hours. जबकि आप बैंक्सटाउन में रहते हैं तो हमने आपके लिए उसी जगह पे एक काम ढूंढा है जो कि छुट्टियों के दिन बंद रहता है, तो आपको किसी भी एक दिन के लिए छुट्टी लेके वहां पे काम करना पड़ेगा। छुट्टियों के दिन बंद रहता है? हाँ, आपने बोला छुट्टियों के दिन बंद रहता है। हाँ, वीकेंड मतलब शनिवार इतवार ही हुआ ना। तो वो छुट्टी का दिन हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, छुट्टी का दिन क्रिसमस डे भी हो सकता है। ओके, हफ्ते के अंत में आने वाले दिनों में छुट्टी बंद रहता है, तो आपको एक दिन छुट्टी लेके ही काम करना पड़ेगा। ओके, रितेश? चूंकि आप बंसक में रहते हैं और आपका काम भी उसी क्षेत्र में है और हफ्ते के अंत में ये बंद रहता है, इसलिए आपके पास कोई और विकल्प नहीं है बजाय आपको छुट्टी लेके कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए। यस, दैट्स करेक्ट। गुड। सुमात्रिता? आप बैंक्सटाउन में रहते हैं तो हमने आपके लिए बैंक्सटाउन में ही एक कार्यस्थल ढूंढा है जो कि सप्ताह के आखिरी के 2 दिन बंद रहता है, तो आपको छुट्टी लेकर ही ये काम खत्म करना होगा। फिर तो मुझे उसका पालन करना ही होगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। क्या मैं अगले हफ्ते से शुरू कर सकता हूँ? Then I must follow the orders. I have no alternate option. Can I start from next week? Yeah, okay. But then I have to follow it. I have no other option. Can I start from next week? yeah, that's correct. Then I have to obey the orders. There is no other option. Can I start by next week? Yeah. Next. Yes, you need to work there every Friday until you have finished your 400-hour order. Before we move on to the next part of this discussion, do you have any questions? Okay, Parth? हाँ, आपको हमेशा शुक्रवार के दिन ही काम करना पड़ेगा जब तक कि आपके 400 घंटे नहीं हो जाते। Okay, रितेश? हाँ, आपको हर शुक्रवार को ये काम करना पड़ेगा जब तक कि आपके 400 घंटे पूरे नहीं हो जाते। और आगे और हम जब आगे बातचीत बढ़ाएं, इससे पहले आपका कोई प्रश्न है हमारे लिए? हाँ यार, सेकंड। सुमात्रिता? हाँ, आपको हर एक शुक्रवार को ये काम करना पड़ेगा जब तक आपका 400 घंटे पूरे नहीं होते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, क्या आप और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, पर मेरी पीठ में तकलीफ है, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता। मेरे पास डॉक्टरी प्रमाण पत्र भी है, पर मैं आज नहीं लाया। क्या मैं आपको अगली बार दे सकता हूँ? But I have a back pain, so I cannot do the laborious work. I have the doctor's certificate as well, but today I haven't brought it. Can I brought that by next week? Okay. Sumatrita?
No, but I have back pain, so I am not comfortable doing hard work. I have medical certificate too, but I haven't brought it today. Can I bring it next time? Okay, yeah, yeah. Parth? Hello? Okay, next one. Okay. Actually, you will be working in a charity clothing outlet, attaching price tags to clothes, putting the clothes on the shelves, and helping with cleaning in the store. Basically, nothing strenuous. Okay, Samadruta. Charity. सेम बोलो, चैरिटी क्लोथिंग आउटलेट या Okay. चैरिटी के कपड़ों की दुकान. चैरिटी को हिंदी में दान कहते हैं. ओके. आपको चैरिटी के कपड़ों की दुकान में काम करना है, जिसमें आपको कपड़े पे स्टिकर चिपकाना और कपड़े को फोल्ड करके रखना होगा. आपको कुछ भी ज्यादा तकलीफ वाले काम नहीं करनी पड़ेगी. हाँ, तकलीफ वाली. Okay, that's fine. Let's see what Ritesh has to say. ओके. ठीक है, पर आपको चैरिटेबल कपड़ों के दुकान में आपको सिर्फ मूल्य का टैग लगाना है, और इसके अलावा आपको दुकान में कपड़ों को खड़ी करके रखना है. ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण काम नहीं है. Okay. Parth? ठीक है, आपको चैरिटी वाले कपड़ों की दुकान में काम करना है, जिसमें आपको कपड़ों के ऊपर मूल लगा के उसे घड़ी करके अपनी उसकी जगह पे रखना है. ये ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है. Okay. What is strenuous exact meaning? मेहनत वाला काम नहीं है. स्ट्रेन्यूअस मतलब जिससे आपको भार पड़े, स्ट्रेन पड़े. मैंने तनाव यूज किया, वो गलत है? स्ट्रेस ज्यादातर हम लोग मेंटल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं या मसल स्ट्रेस के लिए. ठीक है, यहाँ पर मेहनत वाला या भारी काम नहीं करना होगा. ओके. ओके, और आप घड़ी करना कह रहे थे, दैट इज नॉट करेक्ट वर्ड टू यूज. फोल्डेड लिखा था ना, उसने बोला फोल्डेड एंड देन शेल्फ पे. दैट्स राइट, पर फोल्डेड को हम हिंदी में ऑफिशियली घड़ी नहीं कहते, हम तह लगाना कहते हैं या तह करना कहते हैं. ओके. ओके. और शेल्फ को अपनी जगह पे ही बोल सकते हैं ना? हाँ, नहीं, शेल्फ को आप हिंदी में भी शेल्फ बोल सकते हैं, एक्सेप्टेड है वो. ओके. ठीक है. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. यस. जैसे कि फोल्ड को अगर फोल्ड ही बोला, जिसका प्रॉपर हिंदी टर्म है, उसके लिए कितना मार्क्स डिडक्ट होता है? वेरी सब्जेक्टिव, बट 0.5 से लेके 1 2 डिपेंडिंग ऑन कि कितना कॉमन वर्ड है और आपने यूज नहीं किया. जैसे अगर कोई नेम है, फोल्ड नेम नहीं है, तो इस केस में ज्यादा नंबर कटेंगे. पर अगर कोई नेम है, जैसे नेम ऑफ एन आउटलेट, चैरिटी क्लोथिंग आउटलेट, ठीक है, इसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि दान किए गए कपड़ों की दुकान में काम करना है. ठीक है, इसके लिए इतने नंबर नहीं कटेंगे. ये 3 वर्ड्स भी अगर आपने इंग्लिश में बोला है, मे बी 0.5 और मे बी ना भी कटे. ठीक है, पर फोल्ड को आपने फोल्ड ही रखा है, तो उस केस में नंबर कटेंगे, क्योंकि वो नाम नहीं है, उसका हिंदी में एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है. ओके. थैंक्स. मैम, ये नेम्स के लिए भी आई एम कंफ्यूज कि हमें ट्राई करना चाहिए उसको ट्रांसलेट करने का, या हम नेम को हम एज इट इज रख सकते हैं? आई मीन, what do you advise? I would say just keep it in English. अगर आपके पास टाइम है, अगर किन्हीं लोगों के पास 6 महीने का टाइम होता है,
उनको मैं बोलती हूँ कि आप पूरी तरीके से याद करो। पर जिनके पास कम टाइम होता है, भले ही प्रैक्टिस करने के बाद भी देयर आर मल्टीपल नेम्स, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, वो नाम सोचने के कारण काफी जगह हेजिटेशन एंड पॉजेज होने लगते हैं। तो उसके बजाय अगर कोई ऐसा नाम है जो 100% आपको पता है कि हाँ मुझे पता है यही होगा ये, ठीक है, देन उसे हिंदी में करें, अदरवाइज मोस्ट लाइकली कीप इट इन इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट सेगमेंट। यह अच्छा है। मैंने पहले भी एक सुपर बाजार में काम किया है, इसलिए मुझे इस तरह का काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह ठीक रहेगा, बस मुझे जेल ना जाना पड़े। That's great, Mr. Lalit. Okay. Parth? That's good. I already work in a supermarket, so that's not a difficult for me, and I don't want to go to jail. Okay. Samadrita? That's good. I have worked at a supermarket before, so that should not be a problem for me. That's fine. As long as I don't have to go to jail. Okay, yeah. This is good. I have worked in the supermarket previously, so I think I have no problem. I just don't want to go to jail, Yeah. but can work. But can? Work. Okay, let's see. परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह ठीक रहेगा, बस मुझे जेल ना जाना पड़े। That Last sentence उसका यही था, just that I don't have to go to jail. Okay. That's great, Mr. Lalit. Now, could you please wait here? I will need to get some paperwork for you to sign. कोई बात Okay, Ritesh? ये बहुत अच्छा है श्रीमान ललित जी, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुछ कागजी कार्रवाई करके आपके पास जल्द आता हूँ। Okay, Samadrita? ये अच्छा है ललित जी, आप यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कागज लेके आता हूँ जिसपे आपको व्हाट इज सिग्नेचर, हस्ताक्षर हस्ताक्षर या दस्तखत? ओके, कुछ कागजातों लेके आता हूँ जिसपे आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। Okay. Yeah, okay, Parth? ये बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे बैठिए, मैं कुछ कागजात लेके आता हूँ। उसमें वहाँ पे सिग्नेचर का तो कुछ है ही नहीं। Let's see. नहीं है, लास्ट में you'll have to do some paperwork. इस तरह का काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी Let's चाहिए। listen to it. यह ठीक रहेगा, बस मुझे जेल ना जाना पड़े। That's great, Mr. Lalit. Now, could you please wait here? I will need to get some paperwork for you to sign. कोई बात नहीं। I'll have to get some paperwork for you to sign. ओके। सो एक बार आप इंटरप्रिटेशन करिए तो कि ये बहुत बढ़िया है। ललित जी, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ कागजात लेके आता हूँ जिसपे आपको साइन करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। दस्तखत के लिए मैं कुछ कागजात ले आता हूँ, या फिर मैं कुछ कागजात ले आता हूँ, आप उन पर दस्तखत कर दें। ओके। Last segment, I think. आराम से करिए। End of. Samadrita? No rush. Yeah, take your time. Yeah, no rush.
मैम नो वरीज भी पहले था ना, कोई बात नहीं, No नो worries. वरीज, टेक योर टाइम. Yes, no worries. Take your time. Yes, sir, take your time. It's okay. Take your time. All of these are correct. Okay. End of dialogue. All right. Now we don't have enough time to do a dialogue, so we'll do one CCL book. Okay. So we will start with you, Ritesh. Okay. So you do the first Okay. segment, and then Parth, you do the second segment, and then Samadrita, you do the third segment. ठीक है? इसमें क्या करना है? आपके पास already transcript है. All you have to do is frame the sentence and interpret that into Hindi. Okay. So let's start with Ritesh. Ritesh, आप first कीजिए. Okay. शुभ दोपहर श्रीमान डैश. मैं समझ सकता हूं कि आपके पड़ोसी के साथ कुछ मामला चल रहा है. क्या आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं? Yes, correct. Good. Parth. मेरे बगीचे वाला मेरा बगीचा संभालने वाला एक रास्ते का मेरे घर के पीछे के रास्ते का उपयोग किया था पिछले दिन कुछ बाग का सामान देने के लिए, पर मेरे बाजू के घर वाले ने उसको रोका ये कहते हुए कि आप इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते. ओके. गार्डनर को क्या कहते हैं? बगीचे का संभालने वाला. नहीं. माली. माली. दैट्स करेक्ट. ओके. और नेबर को पड़ोसी बोलेंगे, बाजू के घर वाला नहीं. ओके. और लेन हिंदी में क्या रहेगा? रास्ता. गली. यस, या तो गली बोलेंगे या फिर लेन ही बोलेंगे, रास्ता नहीं. ठीक है. अगर रोड वाला लेन हुआ, उस केस में जो होता है ना, एक लेन या दो लेन वाली, उसमें ज्यादातर आप उसे लेन ही बोलें. ठीक है. अच्छा. इनर रोड्स वाले लेन को लेन या गली बोल सकते हैं, तो इट्स बेटर आप इसके इंटरप्रिटेशन मत याद रखिए, लेन ही, इट्स सिंपल. ओके. नेक्स्ट वन, समाद्रता. ये नहीं होना चाहिए था. हमारे खाते के हिसाब से काउंसिल के पास हक होता है गली को इस गली का इस्तेमाल करने का, और कोई नहीं रोक सकता, कोई दूसरे को नहीं रोक सकता वो गली को इस्तेमाल करने से. मैम मैं इसको ट्रांसलेट करूं एक बार? यस रितेश. ओके. ये नहीं होना चाहिए था. हमारे अभिलेख के अनुसार परिषद इस रास्ते को का मालिक है, और उसके अलावा किसी और को इस रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है. मैंने ये घर अपने पड़ोसी से पिछले साल लिया था, पर उसने विशेष परिस्थिति लगाई थी कि इस बेचने के अनुबंध में, जैसे कि खरीदार के पास रास्ते का agreed to abandon the right of laneway and attached to the property. Purchaser has agreed to abandon the right of laneway attached to the property. But खरीदार ने हामी भरी है कि वो खरीदार को ये मंजूर करना पड़ेगा कि वो इस रास्ते से जाना बंद करे, जो उसके प्रॉपर्टी से अटैच, जो प्रॉपर्टी से संलग्न है.
या प्रॉपर्टी में जो गली है उस पे जाने से जाना छोड़ना होगा। ओके ओके ओके, एक और चीज रितेश, अभिलेख का इस्तेमाल रिकॉर्ड के लिए हम नहीं करेंगे, ठीक है? ओके आपने बोला हमारे अभिलेख के हिसाब से, रिकॉर्ड को हिंदी में भी रिकॉर्ड ही बोलेंगे। मैम कई जगह अभिलेख भी मैंने सुना डायलॉग्स में, इसलिए मुझे अभिलेख याद आया। बट इट्स नॉट दिस। अभिलेख हमेशा रिसर्च पेपर या इंस्क्रिप्शन इस चीज में यूज होता है। ओके ठीक है, पर अगर मेंटेन्ड रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, जो चीजें हैं, वो आप अभिलेख कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड और ये सारे जितने भी रिकॉर्ड है, उस चीज को आप रिकॉर्ड ही रखें इन these cases. Okay, ओके next one. आपने इस पे हस्ताक्षर करने से पहले कुछ कानूनी सलाह ली थी या फिर आप या तो फिर खरीदने से पहले? Sorry, I'll just zoom it. Did you get any legal advice before signing the contract? आपने कुछ कानूनी सलाह ली थी इससे अभी अभिलेख पे हस्ताक्षर करने से पहले या तो फिर या सेटलमेंट से पहले, हस्तांतरण से पहले? ये हस्तांतरण क्या होता है? ट्रांसफर। सेटलमेंट, ओके, ट्रांसफर। तो सेटलमेंट का क्या होगा? सेटलमेंट मतलब कि पूरी कीमत किसी भी चीज की चुका देना, ठीक है, कि सारा मामला खत्म होने के बाद। ओके I can get the exact word. समझौता। मैंने अपने वकील से बात की थी कि वो इस अनुबंध को ठीक से पढ़े और सारे कागजी कार्रवाई मेरे लिए करे, पर उसने मुझे ये नहीं बताया, इस स्थिति के बारे में नहीं बताया था। ओके, समाद्रता। आप और एक बार अपने वकील से बात कीजिए और उनको बताइए आपकी स्थिति के बारे में। हम भी आपके पड़ोसी से बात करेंगे और उसको बताएंगे जो आपको अभी बताया। ओके, मेरे वकील ने बताया कि इस पार्ट ऑफ मी। या ओके, गो। ओके, मेरे मैंने अपने वकील से ये बात फिर से की और उनको ये बात बताई और हम आपके पड़ोसी से भी बात करेंगे और कहेंगे जो हमने आपसे कहा है। आप अपने वकील से दोबारा बात कीजिए और उनको ये परिस्थिति के बारे में बताइए। हम आपके पड़ोसी के साथ भी बात करेंगे और कहेंगे जो हमने आपको कहा है। ओके। मेरे वकील ने कहा कि इस अनुबंध के लिए कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस अनुबंध को लेके जरा भी चिंतित है, इसलिए ही ये इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। यस, गुड। समाद्रता। क्या ये सारी समस्याएं ये गली के बारे में है? फोन, जैसे मैंने आपको फोन पर बताया था,
हम ऐसे लोगों का सहायता नहीं करेंगे जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। Parth? नहीं, ये एक अलग मामला है। जैसे कि 6 महीने समझौते होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पड़ोसी की पानी की Same रहेगा इस case हाँ ओके, पानी का सप्लाई मेरे घर से जाता है, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया ये बेचने से पहले। इसके बारे में मुझे नहीं बताया गया बेचने से पहले। Yes, correct. मैं Ritesh? माफी चाहता हूं, पर मैं इससे बेहतर सलाह नहीं दे सकता इस मामले में। हालांकि अ, इस मामले में आपके संपत्ति का अनुबंध, बेचने का अनुबंध जो भी है, आप अपने वकील से जल्द बात करें। हाँ, बेहतर होगा आप अपने वकील से जल्द बात करें। Yep. End of dialogue. एक सेकंड, राकेश जी आप करेगा क्या? Ritesh. आप रितेश जी, आपने क्या बोला? प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का संपत्ति बेचने का अनुबंध। संपत्ति बेचने का अनुबंध। संपत्ति मैम सही है, गलत है? Yes, correct. संपत्ति Okay. बेचने का correct. Okay, I think that's it for today. Unless आपका कुछ questions है, anything you guys wanna ask? आई हैव अ क्वेश्चन मैम। Yes. जैसे कि एक रिकॉर्डिंग प्ले हुआ, उसके बाद इफ आई टेक मोर देन प्रोबब्ली 6-7 सेकेंड्स, उससे कुछ डिडक्ट होता है या फिर यू कैन? 5 seconds के अंदर शुरू करना चाहिए आपको, ठीक है? ओके उससे ओके ज्यादा आप टाइम लेंगे तो नंबर कटने लगेंगे, और आफ्टर अ पॉइंट कोई नंबर नहीं मिलेगा, ओके ओके। ठीक है? Yeah. Okay. All right, then that's it for today. Have a good evening. I'll see you guys on Saturday. So, ma'am, thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शुक्रिया।